back. So today we will discuss our topic, chapter number 7, changing trends in occupation, and we have already done 6 stanzas. So now we are going to start the next topic, the next paragraph, that is the dignity of labor. Here you can see the picture of Mahatma Gandhi ji, a pay for spinning wheel as a pay for recognizing the dignity of labor. Mahatma Gandhi ji always says that you should respect your work, okay? And he was also doing the work every time. Spinning wheel जो था इनका, वहाँ पे हमेशा ये काम करते रहते थे, ठीक है? और he also believe in the work by a hand, okay? So he was also hard worker person. He also give the respect to the work, okay, and always told the people to do work hard, okay. So here you can see the picture, the dignity of labor. All type of work are necessary in our society. We must respect all of them. Means सारे काम जो भी हमारी सोसाइटी में है, ऑल आर नेसेसरी. वी कांट सर्वाइव विद अ वन वर्क. लाइक आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा सारा काम चलेगा. सो वी नीड अ कुक आल्सो, वी नीड अ वर्कर आल्सो, वी नीड अ गोल्ड स्मिथ, वी नीड अ बैग स्मिथ, वी नीड अ कारपेंटर, we need a even shoe mender also, okay. So we can't survive without each and every person, okay. So we need all occupations. So no work is superior, no inferior. कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता. वर्क इज वर्क, काम तो काम है. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू कंसीडर एनी वर्क गुड और बैड. कोई भी काम गुड और बैड अगर हम उसको माने तो कंसीडर करना, उसको मानना, दैट इज़ नॉट गुड, ओके. कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता. वर्क तो वर्क होता है. काम तो खुद में एक रिस्पेक्ट है, ठीक है. वर्क इट सेल्फ इज़ अ डिग्निटी. फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी यूज टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क on his own, even cleaning the toilet. Or Mahatma Gandhi always suggested to the people to do their work own, ओके. मीन्स वो खुद ये कहते थे कि अपना काम खुद करो. और वो जो अपना जो कॉटन का है ना, खद्दर का जो भी वो कपड़ा पहनते थे, वो खुद वो स्पिनिंग व्हील के ऊपर उसको बुन के खुद वो चीज़, स्वदेशी मूवमेंट जो उन्होंने चलाई थी कि जो अपनी चीज़ें हैं वो वाली यूज़ करो, है ना. तो वो खुद अब बाय हैंड हर एक चीज़ को बनाना और अपना काम करने को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे. एंड ही आल्सो इवन हिज ओन इवन क्लीनिंग द टॉयलेट्स. वो खुद कहते थे कि अपनी टॉयलेट्स को, अपने वॉशरूम को खुद क्लीन करो. And this is good for you also, beta. When you are at home, तो जब आप नहाते हो, नहाने के बाद आपके वॉशरूम वगैरह में आप खुद वाइप कर सकते हो, उसको खुद वाइपर मार के उसको साफ़ कर सकते हो. मम्मा का थोड़ा काम कम हो जाता है, ठीक है. ऐसे आप अपने टेबल पे, अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर अपनी बुक्स वगैरह को अरेंज करके रख सकते हो. अपने शू को पॉलिश कर सकते हो. और छोटे छोटे बड़े काम, छोटे से काम है जो आप खुद कर सकते हो. लाइक वी कैन से कि इफ़ अगर आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो उसमें जो यूटेंसिल्स आपके हैं जो आपने यूज़ किए हैं, तो उसको बाद में आप किचन के शैंक में रख सकते हो ना, उसको वॉश करने के लिए. सो इवन यू कैन हेल्प विद योर पेरेंट्स टू वॉश द यूटेंसिल. दिस इज नॉट अ बैड थिंग, ओके. सो दिस इज द डिग्निटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्क. जॉब्स आर नेसेसरी इन अ सोसाइटी, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट all of them. And Mahatma Gandhi, who is also known as the father of nation, used to do all type of work on his own, even cleaning the toilet. No work is superior or inferior. So here we will discuss intellectual work and manual work. So firstly I'll tell you what is the meaning of intellectual work. The work which is done with the head, the work which involve mental labor is called इंटेलेक्चुअल वर्क, जिसमें आपकी मेंटल इंटेलिजेंस ही ज़्यादा जो यूज़ होती है, ठीक है. आप दिमाग से ज़्यादा जिसमें काम करते हो. और वो कौन से प्रोफेशन है? फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्सेट्रा. Okay, so now let's discuss the manual work. What was the manual work? What is the manual work? Manual work is which is done with the hand while using physical strength is called a manual labor. Manual labor जिसमें हम अपने हाथ से काम करते हैं, हमारी फिजिकल फोर्स ज़्यादा काम करती है. फॉर एग्जाम्पल लेबर, फार्मर, रिक्शा पुलर, कुलीज, एक्सेट्रा. आई होप इट्स क्लियर. ओके. So now the next topic is gender discrimination. Gender, you know, and discrimination means the difference between one thing to another thing, okay. So
The gender discrimination. It is the wrong attitude of men against women that had existed in India. India में gender discrimination बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है. Girls and women have not are not given even equal opportunity in education, career and political system. हमारे इंडिया में एजुकेशन अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू बॉयज़ जो गर्ल्स हैं उनको कम प्रेफरेंस दी जाती है. कैरियर में भी बॉयज़ अपनी अपनी पसंद के कैडेट को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को कहते हैं आपने पुलिस में नहीं जाना, आपने आर्मी में नहीं जाना, आप टीचर बन जाओ बहुत अच्छा है, आप ये बन जाओ बहुत अच्छा. मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स हमारे अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम में चलो अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, बट जो हायर्स अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे जेंट्स लोग का ही ज़्यादा वो रहता है, ठीक है. बट इट इज़ चेंजिंग स्लोली एंड वुमेन्स आर क्लेमिंग द rightful place in the society. But now the time has changed, so now the number of women are in the different fields and they are growing. Okay, an important aspect of changing trend in occupation is increase in participation women in a various occupation. हमारा chapter क्या है? Related to occupation. So now we are in the topic. So now in this era the occupation has changed. Okay, so now the women are choosing so many different occupations. Okay, which were they were not they had not permission to choose in the previous time, in the olden time. Okay, when the rural men start migrating to cities in the search of occupation. हमने पहले पढ़ा है कि लो फार्मिंग जो लो इनकम की वजह से, लो अर्निंग की वजह से, लो प्रोडक्शन की वजह से जो फार्मर है उन्होंने माइग्रेशन शुरू किया. देन वुमेन टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग. फिर वुमेन्स ने जो थोड़ी सी जो भी शॉर्ट लैंड ऑफ पीस था उनका, वहाँ पे उन्होंने खुद फार्मिंग वुमेन्स ने करनी शुरू की एंड रिलेटेड एक्टिविटी. बट देयर वर्क इज़ नॉट रिस्पेक्टेड एंड दे आर नॉट गिवन द सेम वेजेस दे आर गिवन टू मैन. बट क्या करती थी वो वुमेन्स? काम तो करती थी लेकिन उनको जो वेजेस मिलता था, जो उनको सैलरी मिलती थी वो मैन के जो है मुकाबले कम थी. उनको इक्वल वेजेस नहीं मिलता था, 50% वेजेस मिलता था. थ्रू वुमेन 50% of Indian populations yet do not get an equal share in occupation, education, health facilities or parliament. Many women suffer due to this unequal treatment known as gender discrimination. Okay, men and women उनमें जो unequal treatment होता है, the many women suffer due to this unequal treatment. जो many women है वो unequal treatments जो है वो men के मुकाबले उनको equal treatment नहीं किया जाता, तो उनको gender discrimination बोलते हैं. So here you can see now the more time is changed, the number of girls they are going to school for their higher education. And this picture you can see the Mary Kom picture, Sania Mirza picture and Karnam Maileshwari picture. She is a weightlifter. She is good in badminton. Okay, so this is a sports personalities. Okay, they are very famous and they won their position and they maintain a new rackets. They made new rackets and they are very well reputed girls. इन्होंने बहुत नाम कमाया है अपना. क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है आगे बढ़ने की, ठीक है. So here you can see this picture. सबको पता है किसकी पिक्चर है. This picture is Kalpana Chawla's picture. She was very famous, very reputed, very well-known personality. She is a Kalpana Chawla. She born in Karnal, Haryana, and she first flew in space in 1997. Okay, and here you can see the picture of rickshaw driving auto rickshaw driving. She is a girl. Okay, she is driving a auto rickshaw, and here you can see one lady is there who is driving a tractor. So nowadays the women are doing every work that in the modern time only the men were doing. Okay, so here come nowadays women are taking occupation that are so labeled as male occupation. There are many women: engineer, doctor, teacher, architect, scientist, consultant and pilots in the cities. In rural area, women are working in the spice, matchboxes, matches के जो बॉक्स होते बो बनाने में, अगरबत्ती फैक्ट्रीज वगैरह में वो काम करती हैं. They have also taken up jobs as a health worker,
teachers and panchayats. They are making an important contribution in the development of country. But अब क्या है, now the time period has changed. The number of women, they are participating in the various activities. Now the girls are a pilot, the girls are a doctor, teacher, engineer, so many occupations. Now the girls are joining a new so many occupations. So now the girl had achieved their dignity, but some occupations are like there the women are not allowed to do that work. Okay, like in parliament there is a only 1/3 girls are there, so it should be like a 50-50%. Okay, so now the time period is changing, so I hope in the coming future the girl status will be a more reputed. Okay, and researchers show that the majority of women workers in rural area are illiterate or semi-literate. Okay, they are getting education and taking up different occupation. Many urban professional women have taken up higher paid and responsible job. Okay, so if we talk about in the rural area, in the village area, there are some women those are not educated and some are semi-educated, means thoda bahut unko padhna aata hai, and they are getting education and taking a different occupation. Now the time is changing. Here you can say this is a picture of women driving train, the women's and the army. Here is the picture of Kiran Bedi. She is the first IPS officer in India. And Fatima Bibi, you can see the picture. This is the picture of first Indian woman to become a female judge of Supreme Court in India 1789. She was also the first Muslim woman to be appointed as a judge. So I hope you enjoyed this video. Thank you so much. This was your chapter, so I hope you understand, and in the next video we will revise this chapter in a very short way. Okay, thank you so much.